Okay, so good evening again. So this is our introduction class. So here we discuss how to approach public administration, how we approach public administration. Acha. So this is a syllabus. Let's start with the syllabus. Okay. So what is our approach? This is complete syllabus of paper 1 and paper 2. So in this class, we will complete the syllabus bit by bit. First, आमे syllabus complete करिबा. Then we will discuss previous year question. As I said, both OPSC plus UPSC question, which are part of our syllabus, we will discuss. So nearly 480 question, I made a target that we will discuss this. तो आमे syllabus करिबा and previous year question. For example, देखो previous year question OPSC mains 2011 or 2022. So this is 2022 question to 2011 question means 21 question. So 21 question of paper 1 unit 1 we will discuss this plus UPSC ro last 5 year question of unit 1. So 21 plus 20 bhabo 41 question we will discuss of this particular unit. Hello. And we will discuss everything as per the question. आमे first question discussion करिवा तापर syllabus पढ़िवा हैला question देखिबा question कोन आसी तापर syllabus and again after completion of this particular part we will again discuss all this question तापर UPSC question तो भाबो तुमे multiple revision so I ensure that you will have multiple revision सेटा गोटे हबो तो syllabus plus previous year question okay आउ extra कोन करिबा हमें so we will exclusively cover second ARC report. Second ARC report one by one, like this is here. Second administrative commission report. This is very important for your answer writing. So this is important for POBET point important. It also important for GS2 and GS4. So RTI hela, RTI, ethics in governance, crisis management, this is disaster management, PRI, terrorism, personnel administration, IT and e-governance, citizen-centric administration, central government, state and district government, and financial management. For example, तमे तोले finance commission कथा लिखुचो, तो you have to mention report 14. This year district collector पढ़िला, you have to mention report 15. PMO आसिला, you have to mention report 13. Citizen charter आसिला, you have to mention report 12. IT आसिला, you have to report 11. Personnel administration आसिला, recruitment, training, promotion, position classification, rank classification, you have to mention report 10. अब एटा ही तुमको मार्क दवा, you will have advantage. तो को आंसर रे को रिपोर्ट लिखिबो, कोन रिकमेंडेशन लिखिबो, you have to know that. Because 15 15 30 टा क्वेश्चन लिखिबार अछि, 30 टा क्वेश्चन रे तमे जदी 20 टा क्वेश्चन रे की 22 टा क्वेश्चन रे स्कोप तो अछि. I will tell you कि पाखापाखि सबु क्वेश्चन रे सेकेंड ARC रो स्कोप अछि. तो सेकेंड ARC जेते बेले लिखिबो, you will definitely get more mark than other. पिला लिखिबे नाही. Ethics in governance, fourth report, बहुत important. PRI, RTI, एथरा गुड गवर्नेंस ऊपर GS2 रे क्वेश्चन आसीची. तो must, second ARC is must. It is like icing in the cake.
आउ कौन इंपोर्टेंट आउ गोटे इंपोर्टेंट होची करेंट एग्जांपल अच्छा करेंट एग्जांपल कौन करेंट एग्जांपल माने we will have newspaper discussion तो गोटे न्यूज़पेपर आर्टिकल अछि आमे ता ऊपर डिस्कशन करिवा maybe it is related to disaster management maybe it is related to personnel administration local governance for example uh, uh, yes definitely तो फॉर एग्जांपल सरपंच को दिया गला आर्थिक क्षमता हैला गोटे न्यूज आसीथिला सरपंच को दिया गला आर्थिक क्षमता दैट इज व्हाट दैट इज फिस्कल डिवोल्यूशन दैट इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज तो एमिति भाबो कि गोटे न्यूज़पेपर आर्टिकल रो हमें प्रोवाइड बुझिबा हैला we read the syllabus and we will read we will understand public administration from a newspaper article तो ये तीनटा जिंस चारटा जिंस आमे करिबा syllabus proper way रे previous year question second ERC and current affair तमरो complete package हे गला आंसर राइटिंग में किछि दरकार नै बिकॉज ए वर्ष तमे 150 to 250 वर्ड क्वेश्चन लिखुचो नेक्स्ट वर्ष भी सेइटे चलिबो so you have to know little but you have to know diversity तमे diverse understanding हेले you can easily do this तो आमर अप्रोच सेटा रहइबो ए वर्ष भी मु कहितली देखो 200 वर्ड प्रैक्टिस करो so you can increase or decrease it to 150 or 250 and there is a scope to write ए वर्ष तो घोषा हेतिला तो तमे सेकंड ईयर से समस्त लिखिथिबो आई एम वेरी मच श्योर से पीएमओ क्वेश्चन आसु से सिटीजन चार्टर आसु कि सेंटर स्टेट रिलेशन आसु जहां भी आसु सरकारिया कमिशन आमे एठी पढितिला हेल्प कला जीएस2 रे फ्रीबीज कथा एथि डिस्कशन करितिला हेल्प कला जीएस2 रे so this will be our approach कि syllabus second year सी previous year question current example चारटा एरिया रे मु तुमको पूरा कंप्लीट माने तमरो पेपर खोजिबा दरकार नै दैट आई विल डू ऑल दिस थिंग्स आई विल डू ऑल दिस होमवर्क न्यूज़पेपर जाई की सेठू खोजी की सेटा मु तुमको बुझे देबी तमरो रेस्पोंसिबिलिटी हैला यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर यस डेफिनेटली मार्क आसीबो डेफिनेटली मार्क आसीबो अच्छा आ गोटे कथा सिलेबस रे कोन इंपोर्टेंट अछि देखो एमती तो देखा जाउची 10 10 20 यूनिट बट एक्चुअली इट इज नॉट बिकॉज पेपर 1 is related to paper 2 एमती एटा ग्रीन मार्क करिछि structure of public organization it is related to center and state administration so we will read combinedly this एमती नुह कि आमे पेपर 1 सारिबा तापरे पेपर 2 को जिबा ना आमे जोटा जहा संगे लिंक आमे लिंक करके पढिबा फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आमे पढिबा along with central and state administration so you will get a link भी देखे दोछि तुमको so who are new student देखो structure of public organization ministry and department एठी अछि ministry and department board commission this is commission line and staff it is nothing but secretariat and directorate so this is how paper 1 structure of public organization link with paper 2 so these are common area so whenever you write a question on line and staff you can link you can give example of secretariat directorate answer a line and staff like that public policy we read with machinery of planning personal administration we read with public service financial administration we read with control of public expenditure and this is the most important unit of paper 2 unit 10 बहुत क्वेश्चन आसी वर्ष में one second
ओके सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आम कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर संगे पढ़ा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस पब्लिक पॉलिसी मेसिनरी प्लानिंग apart from that this year administrative law question asichi so administrative law reform it is linked with major issue personal administration linked with major issue accountability and control linked with major issue accountability and control linked with control of public expenditure administrative law linked with constitutional framework so it is a network approach hello it is a network paper 1 connect with paper 2 got it so ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନେଟୱାର୍କଟା ବୁଝିଯିବ ସେ ପେପର 1 ପେପର 2 ର କନେକ୍ସନଟା ବୁଝିଯିବ it will be very easy for example major issue in Indian administration 60% we will cover inside paper 1 so I will show you so in this way ame jiba and most important thing is we should read first principle and theory of organization after that administrative behavior and after that basic structure never ever read basic concept first principle tapore administrative behavior tapore basic concept so this will be the right approach acha let's discuss the syllabus okay interconnection ta tike dekhei douchi tamaku this is paper 1 unit 3 or paper 2 public policy of planning personal administration देखो recruitment training promotion recruitment training promotion एठी code of conduct integrity अछि paper 2 unit 10 रे अछि and employee relation एठी अछि paper 2 unit 10 रे अछि तापरे formulation of budget finance ministries control over public expenditure audit by CAG parliamentary control accountability and control रे अछि okay acha so this year okay so Sabyasachi, do you have any question anyone have any question just message me and after that use the raise hand option hello ଯାହାର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଥିବ ତ ମେସେଜ ଗୋଟେ କରିଦବ ତାପରେ raise hand ଦେଲେ I will take him okay so first let's discuss this first unit one of the most important unit 1 or unit 2 this consists of भाव तुम 40% of the syllabus unit 1 और unit 2 बुझी गलो तो 30 to 40% of public administration है गला अच्छा तो unit 1 रे कौन अछि let discuss overall कहि दोछि तुमको meaning of public administration scope of public administration significance or importance of public administration relation between public and private administration evolution how evolution of public administration happen new public administration new public management public choice approach state versus market debate and the concept of good governance okay so meaning ru kebe question asi nahi so no need to understand or there will be there never be a question on meaning of public administration apart from this meaning you can have a question from scope significance public private evolution so let's look at this year question so we have two questions that what role does private administration play in developing and influencing contemporary economic and social policy so this is about this private administration public and private administration so public and private administration
so cannot get you. Okay, देखिए ठीक अछि देखो सो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है स्कोप ए क्वेश्चन टा देखो what role does private administration play in developing and influencing contemporary economic and social policy तो क्वेश्चन और डिमांड कौन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रो रोल in developing and influencing contemporary economic and social policy acha so economic social policy it is work of whom public administration it is a work of public administration everyone will know economic social but how private administration play so role of private administration so a particular question you need to understand the concept of npa new right philosophy npm state versus market debate and public private administration believe me it is not a direct question तमे पूरा कॉन्सेप्ट न बुझीथिले कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कोन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन केबे ग्रोथ हैला प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रो केबे ग्रोथ हैला व्हेन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रो आफ्टर न्यू राइट फिलोसॉफी and how does it help or how does it influence economic and social policy so the concept of npm hobo state versus market debate public private administration रे we will read similarity difference contemporary approach तो सही contemporary approach निया जिवो state versus market debate रो concept किछि निया जिवो तापरे से आंसर टा हो तो तमे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाबद रे पूरा बाय हार्ट जेतेबेले बुझिथिबो तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कोठी अछि न्यू राइट फिलोसॉफी पर आसिला एनपीएम कांसेप्ट हैला पब्लिक चॉइस अप्रोच रे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कांसेप्ट अछि स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट रे अछि yes you have to link all these things तो देखो वेरी फ्रैंक आउ तमे घोसी की जाई की आउ से गन आर दोस डे कि टेलर रो कथा लिखो फ्यूल रो कथा लिखो गलिक रो कथा लिखो ना सेटा समस्त घोसी दउतिले लिखि दउतिले तो गोटे भलो पिला गोटे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पिला और गोटे रोड मेमोरी पिला भितरे किछि डिफरेंस हो नथिला so now opsc देखि देला कि you have to be conceptual clear आगो कोन आसुतिला डायरेक्टली write about public private administration similarity between public देखिए दउछि आगु क्वेश्चन आसुतिला प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रो देखो there is hardly any difference between public and private administration today so that means the similarity between public and private administration state and market should cooperate तो आगो एमती क्वेश्चन आसुतिला डायरेक्टली एबे इंटरप्रेट करिछि कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रोल कोन हाउ इट इन्फ्लुएंस economic policy and social policy yes it influenced by participating in the process of governance केबे गवर्नेंस रे पार्ट कला प्राइवेट सेक्टर न्यू राइट फिलोसॉफी आसिला परे प्राइवेट सेक्टर ग्रो हैला गुड गोटे लाइन गुड गवर्नेंस पैराडाइम दैट गुड गवर्नेंस पैराडाइम वांट involvement of market private administration in the process of governance so automatically they influence in contemporary economic and social policy in public choice approach institutional pluralism multi-actor paradigm so you have to write one line of everything ki this is how private administration play a role what innovative way public administration adopt evolving needs of society of 21st century acha public administration केमती इवॉल्व करिवो evolving needs of society in 21st century so 21st century very dynamic approach so 21st century कोन এই মানে 2000 to 2000
99 21st century. So 21st century ର dynamism ରେ public administration କେମିତି adopt କରିବ, what innovative way? answer ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ। ଗୋଟେ answer କଣ ହେଲା? NPM, NPSA, public administration associate କରିବ private sector ku, good governance, PCA, ତାପରେ NCPA, new comparative public administration। तो 21 century dynamism रे public administration evolve होबो। केमिति evolve हो? These are the way। The concept of entrepreneurial government, where government invest less, output is more। खाली example देली, hello, I am just giving you an example that आगुरु केमती क्वेश्चन आसुतला, एबे केमती क्वेश्चन आसुची। आगो स्ट्रेट क्वेश्चन आसुतला यूनिट 1 रे भी देखो जेमती last year 2021 रे आसची NPM result into significant change in public sector ethos and approach। yes, public sector ethos and approach रे NPM change आनीची। आगुरु public sector कोन थिला? वेलफेयर ओरिएंटेड थिला, एबे प्रॉफिट ओरिएंटेड आसीची। आगुरु अकाउंटेबल टू सिटीजन थिला, एबे अकाउंटेबल टू कस्टमर आसीची। आगुरु लेस अकाउंटेबल, एबे मोर अकाउंटेबल। टू सम एक्सटेंट स्टेट क्वेश्चन थिला। evolution of public administration as a discipline, new public administration redefine public administration, state and market, NPM, Woodrow Wilson, Vincent Ostrom। बट ए वर्ष टिके दीटा क्वेश्चन जो आसीची सी तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू शुड लर्न बाय हार्ट व्हाट इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लिकेशन माने कोन। देखो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तमे खाली पढ़िबो यूनिट 1 रे, आउ कोठी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कथा नाही। वेरी सिंपल, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर कांसेप्ट ही अछि यूनिट 1 रे। बस सरी गला पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बस। तो यूनिट 1 को पढ़िबो, यूनिट 1 रे कोन कोन तमे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाबद रे पढ़िछ, यू नीड टू राइट दैट वेरी स्ट्रेट। how public administration adopt, yes, adopt केमती करिवो? नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी रो नीड को adopt करिवो थ्रू ऑल दिस डायनामिज्म। small state, strong state, minimum government, maximum governance, the concept of entrepreneurial government, global constitutionalism, adopting good governance practice, बस एटा। ओके एंड देखो एठी क्लास रे ना तमे सब बेले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऊपर फोकस करो। कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फैक्ट किछि नै इंपोर्टेंट नो, कॉन्सेप्ट। एंड यू डाउट जहा आसीबो तमे पचारिबो। स्टार्ट जेते बेले क्लास रो स्टार्ट होबो, स्टार्ट रे आई विल टेक ऑल ऑफ योर डाउट। 10 मिनिट लागू, 15 मिनिट लागू, 20 मिनिट लागू, आधा घंटा लागू, घंटा लागू, 2 घंटा लागू। देखो डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट, केबे हेजिटेट करिवो नाही कि मु डाउट पचारिले अन्य किए कोन भाबिबो। देखो केही किछि भाबिबे नाही, बिकॉज़ ऑल आर मैच्योर पीपल एंड ऑल आर हियर टू एंटर इनटू द सिविल सर्विस। देखो एटा सबुटू सीरियस एग्जाम। तमरो 10th टिके कम सीरियस हेले चलिबो, 12th रे भी चलिबो, तापर ग्रेजुएशन चलिबो, पोस्ट ग्रेजुएशन चलिबो। एठी ना नॉन सीरियस हेबार स्कोप ही नै। तो मु सब बेले भाबे कि जे एटा प्रिपेयर करछि, फॉर एग्जांपल तुम गोटे टीचर पाखु जाओ, ही शुड बी मोर सीरियस देन यू, जोटा कि भुवनेश्वर रे मु बहुत लेक करे खामखियाली। बिकॉज तमे एठी के आसीचो बहुत गुडे माने एम नै कि आसीचो, बहुत तमरो ड्रीम नै कि आसीचो। एठी जे मु तुमको बाटबणा करली, मु जदी कोर्स न सारिली, मु तुमको जदी राइट डायरेक्शन न देली, तो स्कूल रे चलिबो, कॉलेज रे टीचर एमती करले चलिबो, बट एठी माने बहुत माने मु भाबे इट इज माने sin, unethical तो गोटे स्मॉल वर्ड, इट इज ए sin, कंप्लीट sin, पाप जेमती भुवनेश्वर रे चलीछि, हैला।
भुवनेश्वर 90% खामखियालिया मतलब ही नहीं टीचर से पिला ताड़े आसिला गला चलला बट ना मु एठी बहुत सीरियस तो यू हैव टू बी सीरियस देखो सोमवार दिन होली अछि सोमवार दिन भी क्लास हबो आगुरु कहि दोछि मु क्लास संडे गुटे खाली देइछि मु एंड तापरे मोर जेबे किछि प्रॉब्लम हैला क्लास हबो नै बाकी तमरो रज दशहरा होली दिवाली रे हे परिबो नै बाकी सब दिन क्लास फर्स्ट रे मु कहि दोछि मंडे टू सैटरडे हबो माने हबो तो मंडे होली अछि होली दिन में क्लास हबो आज टू कहि दोछि होली दिन बेले मनाओ इवनिंग रे क्लास नो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलिडे हियर तमे आसीचो माने यू शुड बी माने एठी पेशी हेबा पई आसीचो एमे मजाक चाली नै रज दशहरा पणा संक्रांति छुट्टी से सब नाही तो नेवर एवर डिमांड एनी हॉलिडे फ्रॉम मी हाँ किसी हॉलिडे फॉलिडे रो डिमांड करिवो नाही केबे हॉलिडे हबो हे नै ओके ठीक अछि तो जहार जहा डाउट पचारसिबो यू जस्ट आस्क योर डाउट फ्री फ्रैंक मैनर तमे पांच थर पचारो कि सर मु एनपीए बुझी पारिनी मु न्यू राइट फिलोसफी कोन बुझी पारुनी न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच कोन बुझी पारुनी यू आस्क मी 50 टाइम एंड आई प्रॉमिस मु केबे इरिटेट हेबिनी आई विल हैप्पी टू एड्रेस योर कंसर्न एंड जेहेतु मु खाली प्रोवाइड पढौची completely I give time to provide एमती नो कि मु एठी मु सुनिले आश्चर्य होउची गोटे गोटे टीचर जीएस 1 2 3 4 पढे दोचंदी माने वेरी शॉकिंग इट इज रियली पिला भी पढुचंदी माने नॉट ऑफेंस टू एनीवन बट से जेमती डायलॉग नहीं एक आदमी अपने जीवन काल में इतना चमत्कार कैसे कर सकता है पॉबेट रु पॉलिटी परे थर्ड जिंस पढेवा पय भाबे को पडुची तो टिके सीरियस हुआ समस्ते जेहेतु परीक्षा दोचो result is not in your hand but what is in our hand is we should give our best परीक्षा हॉल रु तमे खुशी रे बाहरिबा कथा कॉन्फिडेंट रे बाहरिबा कथा कि नाही मु 15 टा क्वेश्चन लिखिची प्रोवाइड रो बेस्ट एंड आई हैव रिटन इन ए सैटिस्फैक्टरी मैनर अरे सिंपल क्वेश्चन पिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रो रोल जानि नाहंती मेंस दोचंती हम पिला को पचारुचंती ए कोन होबो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल 20 टा रोल तो तमे एमती आंगुठी रे गणई कहि दबो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 20 टा रोल आफ्टर दैट सेकंड ARC 15 report recommendation on district collector मार्क केमती न आसीबो टेक माय वर्ड तमे पचारो 90% people are not serious हाँ गोटे चली माने सब पिला कौन लगुच कहल कि हाँ हो अरे सेमती हुए नहीं 90% पिला को लगुच हाँ हो मोर एते सीट बाहरी मोर हो 400 सीट रे मोर हो बिल्कुल बुलशिट सेमती हुए नहीं यू हैव टू रिगोरियस एंड एथरो एग्जाम तुमको देखे देला जी भी मेंस देइचो जी न देइचो समस्त बुझी जाइथिबो कि ए वर्षर जो क्वेश्चन आसीतिला इट इज ए आई ओपनर you have to be dynamic for example organic adaptive structure आमे पढुछु कोबेट रे एडहोक्रेसी पढुछु आगुरु कोन सेम पैटर्न क्वेश्चन आसुतिला सेही क्वेश्चन आसुतिला रीड बाबद रे लेखो जीएस रे गुटे फिक्स पैटर्न थिला पिला सेटा पढि दोतिले जाई कि लिखि दोतिले नाउ यू हैव टू कल्चर आगुरु टेलर घोषि दोतिले पिला टेलर फ्यूल घोषि दोतिले लिखि दोतिले बट एबे इंटरप्रिटेशन पडिबो तमको सिंपली यूनिट 2 रो देखै दोछि यूनिट 2 रो आगो एबे क्वेश्चन देखि आगरो कोन आसुतिला मैक्स वेबर डायरेक्ट आसिला मैक्स वेबर फेयल ए वर्षर क्वेश्चन how does an organization's distribution of authority and responsibility impact its efficiency and effectiveness भाबो क्वेश्चन पिला कहउछन सर थ्योरीज देला नै अरे ओपीएससी कोन तुमको पचारिबो हाँ पिले को क्वेश्चन देबा आज्ञा टेलर दे दियंतु मैक्स वेबरटा दे दियंतु व्हाई how does an organization's distribution of authority and responsibility impacts its efficiency and effectiveness so straight authority and responsibility
एंड अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मागिनी सुनो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले तुम लिखि जानतो yes this is type of authority type of responsibility no so how does organization distribution of authority and responsibility so you need to write about theorist that authority must commensurate with responsibility ki kohichi Payol Golick Orbic principle of correspondence Taylor ର କଥା লিখিପାରିବ and it must be equal authority and responsibility yes decode କରିବାଟା ବହୁତ important तो এটা বারংবার কোহা হইছি এটা বাকি পিলা দেখে কোন অর্গান ডিস্ট্রিবিউশন অফ অথরিটি রেসপন্সিবিলিটি ইম্প্যাক্টেড এফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস সো থিওরিস্ট কথা লেখা হবো কি থিওরিস্ট কোন কইছন্তি what is authority what is responsibility what is theorist idea principle of correspondence Fayol কইছি টেলর কইছি ম্যাক্স ওয়েবার কইছি that authority must commensurate with responsibility authority without responsibility is disastrous responsibility without authority is meaningless but in the same way the classical theorists say the concept of delegation where the authority holder delegate organization re authority holder delegate its authority to the subordinate but keep responsibility within him if at all he delegate the responsibility it is operational responsibility and not final responsibility so this has violated the concept of principle of correspondence and this impact the efficiency and effectiveness of the organization so you have to interpret एथिरे कोन टेलर आसिला फ्यूल आसिला गलिक आसिला ऑर्बिक आसिला मैक्स वेबर कथा लिखि पारो तमे एमपी फोलेट कथा आसीबो एठी तो पांचटा थ्योरिस्ट ना तांकर आइडिया लिखिले जाई मार्क मिलिबो तो मोस्ट ऑफ द पिला कोन लिखिथिबे हां अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी सरी गला हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्ले बिल्डिंग अच्छा एटा को हमें मिक्स करि परिबा यूनिट 4 रे कम्युनिकेशन अछि यूनिट 2 रे कम्युनिकेशन अछि strong employee relation with an organization so yes communication the classical theory what is communication classical idea of communication top down communication rigid communication formal type of communication Ilton Mayo informal communication the concept of Grapevine Keith Davis effective communication result into less conflict as say by MP Follett Bernard's idea of communication देखो एथिरे पूरा थ्योरिस्ट रो कथा आसीबो कि क्लासिकल थ्योरिस्ट टेलर फ्यूल गॉली कर्बिक मैक्स वेबर को टाइप रो कम्युनिकेशन कहिले इल्टन मेयो को टाइप रो कम्युनिकेशन कहिला एमपी फोलेट कहिला इंटीग्रेशन टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट चेस्टर बर्नार्ड कहला कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी लिकर्ट कहला लिंकिंग पिन मॉडल क्रिस आर्गरिस कहला कोन फ्यूजन प्रोसेस पर्सनलाइजेशन प्रोसेस सोशलाइजेशन प्रोसेस फ्यूजन प्रोसेस तापरे यू नीड टू सेंसन रो डायग्राम करिवो सेंडर रिसीवर कोडिंग डिकोडिंग मैसेज चैनल so effective communication maintain strong employee relation I doubt people will write theorist in this ସେମାନେ ଖାଲି communication लिखि देथिबे हैला this is माने पॉवर्टी गुड अछि हमर सिस्टम अप्रोच कोन कहिला simply system approach कहला you have to be open system you need to adapt to the change in the surrounding if you cannot adapt to the change in the surrounding you move towards positive entropy or disintegration bas jodi pila ei OPSC ro change को adopt करिवे नाही so they will decay जे adopt करिवो से survive करिवो adopt करिवो माने तमे conceptually strong हो कम्युनिकेशन आसिला माने यू हैव टू लिंक कि कम्युनिकेशन को थ्योरिस्ट मानक संगे अच्छा यूनिट 3 4 रु किछि क्वेश्चन आसी नै वर्ष हां कम्युनिकेशन गोटे कहि परिबा हमें कम्युनिकेशन लिंक करि के गोटे क्वेश्चन आसी छि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल रु आसी छि क्वेश्चन 6टा क्वेश्चन आसी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल रु
है 6 क्वेश्चन सो मोस्ट इंपोर्टेंट मु सब बेले कहे एटा इंपोर्टेंट यूनिट how can effective public administration promote transparency and accountability dynamic structure of public organization how can we effectively address combat corruption public participation in administration customer citizen charter ओके तो गोटे जस्ट कहली तुमको कि माने हाउ वी नीड टू इवॉल्व नोट्स पढ़ी की बही पढ़ी की हबो नाही तुमको पूरा कांसेप्ट बुझिया को पड़िबो यू हैव टू इंटर रिलेट पेपर 1 विथ पेपर 2 ओनली देन यू कैन सर्वाइव ओके सिंपली गोटे कहि दोची माने सिलेबस पूरा डिकोड कर दोची मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नो नीड टू गो थ्रू हु मीनिंग किछि नै just public administration basically এটা first evolution to start হবা কথা public administration as a discipline we found in 1887 ହେଲା तो 1887 रे public administration बोली गोटे concept आसिला जो स्टोरी कहि दोछि public administration रॉफ रे स्टोरी ऑफ public administration गप हिसाब रे बुझ এটা ହେଲା 1887 before 1887 गोटे थिला Paul Science भितर थिला public administration very simple 1887 आगु Paul Science भितर थिला public administration is not a separate or individual discipline it is found inside Paul Science ठीक अछि so 1887 रे कोन हला 1887 रे Woodrow Wilson is a thinker janicho he is regarded as the father of public administration I hope everyone knew him Woodrow Wilson so Woodrow Wilson कोन करले से कहिले dichotomy गोटे word use करले that means separation of Paul Science and public administration से कहिले कि Paul Science has its own work public administration has its own work so we should study separately and hence start a separate discipline that is public administration एमिति public administration रो जन्म हेतिला this is the first stage of growth of public administration तो गोटे ग्रोथ केमती हबो जने जन्म हेले ही ग्रोथ हबो तो एठी जेमति सिलेबस रे देला कि evolution of this discipline evolution how public administration evolution public administration रो केमती हला evolution hela public administration janma hela first stage that is polity administration dichotomy clear very simple छोटा स्टेज अछि निकोलस हेनरी रॉबर्ट कोलंबस की देइचंती this is the first stage तो public administration रो जन्म हला केबे 1887 रे contributor की Woodrow Wilson like Mahatma Gandhi father of nation Woodrow Wilson is father of public administration because his contribution towards the growth and development of public administration and he has written a famous article the study of administration in American political journal he was he was a US president political science professor okay so Woodrow Wilson जानी गलो अच्छा study of public administration a famous article he has written and he has initiated dichotomy means he want public should be studied separately from Paul Science अच्छा so I hope you all know about Chanakya Chanakya na समस्त जानिथिबो who has written Arthashastra Arthashastra also a very rich book related to public administration but Chanakya cannot become as famous as whom Wilson he cannot become as famous as Wilson there are many reasons so although Arthashastra is very rich content it cannot be as famous as the study of administration so Wilson is regarded as father of public administration but Arthashastra has very rich content
and yes, we still give quote of Arthashastra in many answer. Corruption re hela and paper 2 unit 1 re we give. Okay, तो एटा ही गला कोन हला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तापरे डेफिनेशन जेमति सिलेबस रे देछि डेफिनेशन देखो सिंपली कहि दोछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज टू वर्ड जे बेसिक कथा हबा हमें सिलेबस को जीवानी वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द गोटे दिटा तीनटा क्लास तम गोटे मु प्रीफेस देबे कि कोन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल केमिति आसिला जस्ट गोटे स्टोरी हिसाब रे सुनो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे सब्जेक्ट हिसाब रे इवॉल्व होला it has two words one is public one is administration again content of two words ad plus minister ad for minister that means management of affair management so very simple management of public affair is public administration management of private affair is private administration देखो केबे से घोषिया पई चेष्टा करिवो नाही बहुत जगह रे मु YouTube रे देखिछि को टीचर माने से माने डेफिनेशन डकांती देखो सेटा आमे जेतले प्रीलिम दोउतुलु व्हेन वी आर यूज्ड टू गिव प्रीलिम इन यूपीएससी जेतले प्रीलिम रे ऑप्शनल थिला वी यूज्ड टू रिमेंबर बिकॉज़ सेतले क्वेश्चन आसुतिला कि को थ्योरिस्ट कोन डेफिनेशन देछि एबे किछि दरकार नै वेरी सिंपल व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू रे पचरले भी एटा कहबो and management of private affair is private administration अच्छा मु खाली सुपर माने ओवरऑल कहूची डेप्थ को जाउनी मीनिंग हे वाला तापरे सिलेबस रे देछि सिलेबस हिसाब रे जीवा स्कोप देखो वेरी सिंपल यू आर और वी आर लिविंग इन ए डेवलपिंग कंट्री एंड तमे समस्त जानिचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे सर्वा तापरे बीडीओ को जानिचो तहसीलदार को जानिचो तापरे तमे सेक्रेटेरिएट कथा जानिचो ओडिशा सेक्रेटेरिएट लोक सेवा भवन तो वेरी सिंपल तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आसुची तो पब्लिक रो स्कोप माने फॉर एग्जांपल जेतेबेले तमे लेमन वे रे कथा होचो आरो स्कोप कोन ओएस रो स्कोप कोन आरो स्कोप कोन तो किते एरिया कवर करूची पब्लिक माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री सो लाइक इन इंडिया तमे जानिचो कि सबु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करूची जहा तमे एबे तमे मु बसिचू इट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तमे मो से कनेक्ट हे की बसिचो दैट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दिस इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तम घरे लाइट जळुची मो घरे लाइट जळुची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइट नथिले तमे कहबो कि एबे सर लाइट तो टाटा पावर हैला और टाटा पावर को रेगुलेट की करूची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नले टाटा पावर इलेक्ट्रिक बिल एते बढ़ाई देबो यू कैन नॉट अफोर्ड आई कैन नॉट अफोर्ड सो टाटा पावर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन टाटा पावर केबे आसिला एलपीजी परे देखो बहुत सिंपल वे रे कहूची बुझो गोटे सिंपल टाटा पावर एग्जांपल नवा टाटा पावर लाइट जळुची तम घरे लाइट मो घरे लाइट जळुची टाटा पावर दोची तो टाटा पावर इज ए प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा तो आगुरु गवर्नमेंट थिला प्राइवेट को दे देला केबे दे देला जदि गवर्नमेंट प्राइवेट को देले ताको कोन कहै छै प्राइवेटाइजेशन को होय प्राइवेट सेक्टर रो ग्रोथ हैला लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी केबे हैला इंडिया एलपीजी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया रे हैला इंटरनेशनल वे रे कोन हैला ताको कहै छै न्यू राइट फिलोसॉफी केते बेले आसिला मिनोब्रुक सेकंड कॉन्फ्रेंस रे जेते बेले कहा गला स्टेट शुड बी स्मॉल बट स्ट्रांग जीबी से ठीक है
देखो स्कोप जेतेबेले कहली वाल्डो कहिथिले, वाल्डो इज ए थियोरिस्ट, वाल्डो कहिथिले द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड बट इट हैज ए बाउंड्री दैट इज गवर्नमेंट इन एक्शन. सो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ करुचे सेटा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ता बाहर को जोटा सेटा स्कोप रे नाही. फॉर एग्जांपल आगुरु कोन होतला सिविल सर्विस कोचिंग, यू ऑल नो सिविल सर्विस कोचिंग टा गवर्नमेंट रो स्कोप बाहर थिला बिकॉज़ गवर्नमेंट किछि करू नथला ता पई प्राइवेट सेक्टर ही सिविल सर्विस कोचिंग दोतला. एबे गवर्नमेंट ताको एंटर कलानी. ओडिशा गवर्नमेंट 200 पिला को फ्री रे लॉजिंग बोर्डिंग देकी कोचिंग दोउची, से सिविल सर्विस प्रिपेयर करिवे. बट दैट इज नॉट माने दैट विल नॉट फुलफिल द पर्पस. 200 पिला केमती हबो? पिला तो 2 लाख दउचंती ना, तमे 200 पिला को खाली कोचिंग दो, बाकी पिला कोआडे जिवे? सो जेमती मु हेली अन्य कोचिंग माने हेले, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो the scope of public administration is very wide. So public administration देखो सबू कवर करूची. तमे जदि कहिबो तमे एवरीथिंग माने सबू किछि, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सबू 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 हॉस्पिटल, एवरीथिंग. तो प्राइवेट सेक्टर हेले भी, फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर, but it also come under the scope of public administration because public administration regulate the affair of Apollo hospital. सबु किछि आसुची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भितरे, सबु किछि आसुची. सो हेगेल सेड स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. एमती भगवान थिले ना, स्टेट गवर्नमेंट इट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. इट इज लाइक गॉड. स्टेट इज लाइक गॉड. हैला हेगेल कहिछि स्टेट इज लाइक गॉड, इट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. अच्छा ठीक अछि. सो दैट इज स्कोप. माने वाल्डो कहले स्कोप इज वेरी वाइड बट इट हैज ए बाउंड्री दैट इज गवर्नमेंट इन एक्शन. एंड सेही स्कोप भितरे तमे 10टा पॉइंट पढिबो. फॉर एग्जांपल पोस्टकर व्यू कोन, सब्जेक्ट मैटर व्यू कोन, इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट कोन, वी विल गो थ्रू दैट स्कोप. तापर सिग्निफिकेंस. अच्छा इंपोर्टेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेंस कोन आम कंट्री रे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन करूची, जदि तुम ब्लाइंडली तुम किछि जानि न, तुम खाली आखि बंद करिवो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन, तुमको कोन दोउची, तुम जानिबो कि हां लोक पीडीएस नउचंती, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रोड बनेगी दोउची, तुमको इलेक्ट्रिसिटी दोउची, ड्रिंकिंग वाटर दोउची, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूची, डिजास्टर हेले लोकों को पॉलिथिन दोउची, घर दोउची गवर्नमेंट. जहां जहां भी तुम जानुचो गवर्नमेंट दोउची ना, दैट इज सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तुमको सर्विस प्रोवाइड करू, डिजास्टर मैनेजमेंट करू. ओडिशा गवर्नमेंट जहां भी करूची हैला, पानी टू देकी बिजु स्वास्थ्य कार्ड सबू, everything is significance. So you people are want to join administration because the significance is very wide. As a video तमरो बहुत किछि तमे वीडियो हेले जानिबो, माने सबु किछि ओटे ब्लॉग रो सबु किछि तमे. सो एंड इन ए डेवलपिंग कंट्री जोटी कि इंडिया रे 80 कोटी लोक दे आर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, पीडीएस ऊपर डिपेंड करछन, स्कोप ऑटोमेटिकली बढ़ी गला. तुम इमेजिन करो जदि स्टेट न थांदा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न थांदा, तो 80 कोटी लोक भोकरे रहि थांते. जस्ट इमेजिन. गवर्नमेंट आहार केंद्र कला, बरमुंडा हॉस्पिटल, सॉरी बरमुंडा बस स्टैंड कला, जहां भी करूची ना गवर्नमेंट, दैट इज द सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ए नेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एटा हला कोन significance of public administration, importance of public administration. Okay, very simple. Importance of public administration. Public administration टा such important कि ता छड़ा किछि जहां भी तमे देखो सबु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट सेक्टर कले भी बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो हेल्प रे, सपोर्ट रे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किछि करि परिबो नाही. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उठे हॉस्पिटल बनेबो, लैंड एक्विजिशन की करिवो,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबु किछि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एवरी हेल्प पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दबो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फैसिलिटेटर फैसिलिटेट फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल दोची तमे जानि भी थिबो तमे यदि फ्यूचर आईएएस हेले यू माइट वर्क इन इडको सुनिथिबो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा तो इडको कोन करे जो इंडस्ट्री माने आसे तांको ना जमी दिए तो जमी देले सिना गुटे इंडस्ट्री एस्टाब्लिश होबो तो तमे एज ए ओएस तमे यदि लैंड ऑफिसर होबो इडको रो तमे तम डेजिग्नेशन होबो लैंड ऑफिसर सो एज ए लैंड ऑफिसर तमे कोन करिवो तमे एन्श्योर करिवो कि गुटे प्राइवेट सेक्टर आसी जे ताकू लैंड दिया हो लीज रे so this is the significance of public administration from womb to tomb गोटे छुआ जन्म हेबा आगु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जननी सुरक्षा योजना हैला बिफोर ए चाइल्ड बर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कि नहीं गोटे प्रेग्नेंट मदर को फैसिलिटी दिया होची खाइबा पे दिया होची मेडिसिन्स दिया होची छुआ जन्म हैला इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मां को 5000 टका दिया होची तापर छुआ को टीका दिया होची छतुआ डाली दिया होची चलिला तापर बिजु स्वास्थ्य कार्ड जहाँ जहाँ भी देखो तापर आफ्टर डेथ जनक डेथ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन करूची हरिश्चंद्र योजना माने जन्म हेले भी गवर्नमेंट पैसा देबो मला परे भी पढिबा पई गवर्नमेंट पैसा देबो हरिश्चंद्र योजना गॉट इट ता परे भी स्टेट सर्टिफिकेट देबो कि ए लोक डेथ से सर्टिफिकेट देखेले जाई आकु प्रोसीजर हो just imagine this is the significance or importance of public administration before birth after death हैला अच्छा पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन देखो सिंपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानी लो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भितर देयर आर सम सिमिलरिटी देयर आर सम डिफरेंस सिमिलरिटी भी अछि डिफरेंस भी अछि एंड present context में आजी डेट रे द डिफरेंस इज वेनिशिंग ग्रेजुअली डिफरेंस टा नाही धीरे 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 डिफरेंस कमी जाउची केमिति कमी जाउची पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भितरे एंड विथ एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन हैला नेशनलाइजेशन हैला पीपीपी मॉडल जानिथिबो जीएस रे आसीथिला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द कांसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैला कि लेटरल एंट्री हैला all these things has reduced the difference between public and private administration है तो public private administration रे similarity difference and contemporary approach with example कि आज डेट रे किते डिफरेंस नाही जदि डिफरेंस थिले एयर इंडिया प्राइवेटाइज हे पार न थांता लेटरल एंट्री प्राइवेट सेक्टर लोक आसी गवर्नमेंट रे काम करि पार न थांते पीपीपी मॉडल हे पार न थांता ओके अच्छा इवोल्यूशन कोन देखो एटा मु काहे की कहूची इन दिस वे वी विल कंप्लीट मु माने गोटे ओवरऑल तुमको गोटे सिलेबस पर सारी देबी लागू गोटे दी दी 3 दिन नो प्रॉब्लम विथ इट तापर पुनी पढिबा स्टार्टिंग रो सो एटा गोटे भाबो हमें गोटे 4-5 आवर रो गोटे सिलेबस सारीबा कि मु गोटे कहि देबी कोडी कोन अछि तो यू विल फील लाइक ए रिवीजन ओके सो इवोल्यूशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इवोल्यूशन देखो एटा फर्स्ट स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो जन्म हैला द कांसेप्ट ऑफ डाइकोटोमी सेपरेशन तापरे सेकंड स्टेज अछि थर्ड स्टेज अछि फोर्थ स्टेज अछि फिफ्थ स्टेज सिक्स्थ स्टेज सो 2 3 4 स्टेज ता जानिबाटा बहुत इजी केमते मु कहि दोछि this is second stage this is third stage this is fourth stage so I said we need to read unit 2 first second stage रे principal stage आसिला ए माने देले
प्रिंसिपल थर्ड स्टेज रे ह्यूमन रिलेशन स्टेज इल्टन मेयो फोर्थ स्टेज रे बिहेवियरल स्टेज हैला देखो बहुत सिंपल वे रे मन रखी गलो तमे जानिचो फर्स्ट क्लासिकल थ्योरीज आसी जंती तापरे ह्यूमन रिलेशन आसी तापरे बिहेवियरल आसी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट इज ला डाइकोटोमी मन रहिला नि कुह सिलेबस रु ए क्वेश्चन आंसर मन रहि जेबो बिकॉज फर्स्ट तो डाइकोटोमी समस्त जानिचो वुड्रो विल्सन आसिले सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज सेकंड है क्लासिकल थ्योरीज जोटी टेलर फ्योल कलिक तांको प्रिंसिपल देले नेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन तापरे बिहेवियर हैला फिफ्थ क्वांटिटेटिव अप्रोच सिक्स पब्लिक पॉलिसी तो विदाउट एनी एफर्ट तमे चारटा स्टेज तो मन रखि देलो आज फर्स्ट क्लास रे मते बिलीव मी मते बहुत डिफिकल्टी होतला मन रखिबा पय से स्टेज बट वेरी इजी dichotomy classical human relation behavior so evolution how public administration evolution data theorist na gote nicholas henry a gote robert golombowski done acha new public administration 1887 public administration take birth 1968 new public administration 1887 रे तो public administration थिला अच्छा public administration थिला Wilson has started the dichotomy एठी पुनी वाल्डो स्टार्ट कला न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुझ एथिरे तीनटा कॉन्फ्रेंस हेतिला मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1 मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस 3 एंड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकंड और थर्ड 1968 1988 2008 मिनोब्रू 4 और 2028 रे तो ए पीरियड टा जो चलिला 1887 to 1968 we can call this Wilsonian public administration or old public administration अच्छा सिंपल क्वेश्चन जदी गोटे जिंस चली तो ए न्यू टा कोन काहे की व्हाट इज द नीड what is the need of this new public administration कौन माइंड को आसुची गोटे तो वुड्रो विल्सन कहिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटा 1887 रु 1960 जे चलीतिला तो वाल्डो एमती काहे की माने कौन माइंड को आसुची गोटे लेमन हिसाब रे पचारुची जे जानि नबे से आंसर दे परिबो यस सो रिफॉर्म and definitely the old public administration has certain flaw certain limitations simple apple 12 13 14 सीरीज आसुची तो काहे के आसुची change we need to adopt with the dynamic change of the system society है ना तो this is the development 1887 रे जो public administration आसिला it has certain flaw so in 1968 the concept of new public administration है new public administration रे Minobrook 1 Minobrook 2 Minobrook 3 तीनटा conference हेतिला so what is the new means existing or the traditional public administration cannot solve the problem of society so Waldo want to reform it
जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिला सेटा सोसाइटी रो प्रॉब्लम सॉल्व करिबारे असमर्थ हैला. For who is Waldo, who is a theorist, he want to redefine the existing public administration and give his own idea, that is new public administration. है ना, माने गोटे लेमैन हिसाब रे बुझो 1887 रु जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चली थिला ताकू वाल्डो कहले ना एटा आ चलीबो नाही, आकू रिफॉर्म दरकार. We need to redefine the existing theory and practice of public administration, that is new public administration. New public administration रे तीनटा कॉन्फ्रेंस हला, मिनो ग्रुप 1, मिनो ग्रुप 2, मिनो ग्रुप 3. मिनो ग्रुप 1 headed by Waldo, मिनो ग्रुप 2 headed by Golumbowski, मिनो ग्रुप 3 headed by Rosemary O'Leary. And मिनो ग्रुप 2, मिनो ग्रुप 2 गोटे कांसेप्ट देला, that is cut back management, roll back of state, the concept of small state, strong state. तार अर्थ कोन कट बैक मैनेजमेंट, जस्ट इमेज कट आउट बैक आगुरु कोन थिला 360 डिग्री, दिस 360 डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डू एवरीथिंग. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुमको मिल्क भी बिकिबो. फॉर एग्जांपल समस्ते क्यूबा रो ना तो सुनिथिबो. क्यूबा इज ए सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. क्यूबा इज नैनी स्टेट. क्यूबा टिके जाइए जे सर्च करिवो हैला एवरीवन. क्यूबा मोहित ना क्यूबा बाबद टिके यूट्यूब रे देखिबो, यूट्यूब. तो समस्ते क्यूबा बाबद टिके यूट्यूब रे देखिबो. क्यूबा रो इकोनॉमी बहुत जाय जंदे मु से माने भूली जाउची से गोटे यूट्यूबर मु तारो देखे ट्रैवलिंग देसी हैला, ट्रैवलिंग देसी क्यूबा मारिबो. से बहुत रिफॉर्मेटिव माने बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए. तो क्यूबा रो कोन स्टोरी अछि कहि दोछि. क्यूबा रे एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर किछि नाही, किछि नाही प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट तुमको राशन दबो, गवर्नमेंट स्कूल रे पढ़ेबो, मेडिकल एजुकेशन फ्री, गवर्नमेंट सबु दबो. तापर गवर्नमेंट तुमको चाकरी भी दबो. तो ताकू कोन कहै जे, ताकू कहै जे नैनी स्टेट. नैनी माने बुझो तो तैमुर नैनी. नैनी माने तुमको जे सब बेले पूरा पैम्पर करके रखिबो, that is नैनी स्टेट, ओवर केयरिंग स्टेट. तो ये मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकेंड आगुरु यूएस भी थिला नैनी स्टेट. माने कोन यूएस सब किछि दउतला, प्राइवेट सेक्टर माने एग्जिस्टेंस थिले भी माने नेग्लिजिबल थिला. यस मोहित, हाँ आई फॉलो हिम. तो ट्रैवलिंग देसी रो देखि देबो से क्यूबा सीरीज ता, तापर तमे ना न्यू राइट फिलोसफी बढ़िया बुझी पारिबो. तो क्यूबा बाबद रे जानो तो न्यू राइट फिलोसफी कांसेप्ट कोन वेरी इजीली बुझी हबो. तो क्यूबा रे कोन, क्यूबा रे एबे भी क्यूबा इज एन एनी स्टेट. स्टेट प्रोवाइड यू एवरीथिंग, जहां दरकार तुमको स्टेट दबो. गवर्नमेंट रो दुकान खाली सब गवर्नमेंट रो दुकान, प्राइवेट किछि नाही सेठी. ठीक अछि. तो यूएस रे भी से थिला कांसेप्ट तो कट बैक मैनेजमेंट. तो ये कहिले कि ना स्टेट शुड नॉट गिव एनी एवरीथिंग. एबे कोन होबा कथा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एति की दो, बाकी जहां अछि आउ कहार प्रॉब्लम होछि ऑडियो. बाकी दिस पार्ट इट शुड बी गिवन बाय प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन.
ହେଲା एटा हला कट बैक मैनेजमेंट एटा हला रोल बैक ऑफ द स्टेट पछु को पळे आसीबो रोल बैक करिवो ओके अच्छा नेहरिका देखो तमरो रिफ्रेश करो टिके तो ए बुझी परछो कट बैक मैनेजमेंट कोन माने स्टेट कोन करिवो स्टेट सब किछि दबनी स्टेट पछु को पळे आसीबो एंड प्राइवेट सेक्टर से जगह को फिलफिल करिवे द कांसेप्ट ऑफ स्मॉल स्टेट स्ट्रांग स्टेट माने स्टेट स्मॉल हे जीवो नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन स्टेट कमी जीवो छोटो हे जीवो एंड सेटा फुलफिल करिवो प्राइवेट सेक्टर ताकू कहा जाय द कांसेप्ट ऑफ स्मॉल स्टेट तो प्राइवेट सेक्टर रो ग्रोथ हैला स्ट्रांग केतेबेले state should be small but it is strong state कोन करिवो facilitate करिवो facilitate private sector and simultaneously state regulate private sector for example DGCA समस्त जानिचो IRDA TRI all are regulatory agency ठीक अछि so a new right philosophy India को आसिला in term of new economic policy or LPG जो थिरे प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन को फोकस करा गला एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कोन कहिले मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सुनिथिबो समस्ते minimum government maximum governance and prime minister state that state has no business to do business माने स्टेट बिजनेस करिवो नाही स्टेट तुमको खीरो बिकिबो नाही कार बिकिबो नाही तुमको स्टेट किछि करिवो नाही लेट प्राइवेट सेक्टर डू ऑल दिस थिंग्स प्राइवेट सेक्टर सब करंतु आमे खाली मॉनिटर करिवो आमे रेगुलेट करिवो तो फॉर एग्जांपल तुम ओडिसा लेबर सर्विस रे कोन करिवो तुम काहा को रेगुलेट करिवो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करिवो माने गुटे कंपनी अछि भूषण स्टील प्लांट अछि सेठी बहुत लेबर काम करूजंती ठीक अछि काम करूजंती बट सेमाने लेबर मानन को केमिति ट्रीट करूजंती सेटा किए देखिबो सेटा तमे देखिबो असिस्टेंट लेबर ऑफिसर केमिति थिले ना से एस्पिरेंट सीरीज रे इटा भाटी रे लेबर मानन को किए देखुदिला से देखुदिले असिस्टेंट लेबर कमिश्नर येलो yes like that state regulate करबा गोटे एग्जांपल दोउची ए जमी बिकिला बी को ठीक अछि बिना गवर्नमेंट अप्रूवल रे बिकी परिबो तमे ओआरएस ले कोन होबो कोन ताकू कोनती रजिस्टर सब रजिस्टर सो बिना सब रजिस्टर रो साइन रे केही काहा को जमी बिकी परिबे नाही बुझी परछो स्टेट कोन हैला स्टेट कहिला कि बाबू मु खाली रेगुलेट करिवि प्राइवेट सेक्टर सर्विस सब दियंतु लोकन को बट आई ओनली रेगुलेट फॉर एग्जांपल एबे देखो सिविल एविएशन रे गवर्नमेंट रो किछि रोल नाही कंप्लीट प्राइवेट बट डीजीसी अछि बिना डीजीसी रो परमिशन रे गोटे प्लेन टेक ऑफ करि परिबने हैला one of my friend is working in DGCA he is an air ordnance officer से साइन करी कि दबो कि this plane is worthy enough to fly तापरे प्लेन उड़ीबो से जो एयरवेज से था बुझो तो डीजीसी की स्टेट एंड माय फ्रेंड इज पार्ट ऑफ स्टेट तो से यदि अप्रूवल करिला कि दिस इंडिगो फ्लाइट इज नॉट मींस इट कैन नॉट फ्लाई तो से रहिला से प्लेन उड़ी परिबो नाही so he is a part of regulator DGCA director general of civil aviation
तो एनपीए रे जो कांसेप्ट आसिला कोन कि स्टेट रो फंक्शन को कमे देबा स्टेट खाली फॉर एग्जांपल तुम देखिथिबो तमरो बाली यात्रा रे समस्त जाइथिबो गवर्नमेंट किसी स्टॉल पकोची दहीबरा आलुदम कि चाट रो किसी स्टॉल पकोची ना बट तुम देखिथिबो गवर्नमेंट ऑफिसर जिबे एनफोर्समेंट रे चेक करिवे दहीबरा ठीक अछि कि नै फोपाडी दियो आलू खराब अछि फोपाडी दियो एटा बासी फोपाडी दियो तेल खराब फोपाडी दियो सेटा कोन लेट प्राइवेट सेक्टर सेल गुपचुप चाट दहीबरा हमर किछि असुविधा नाही बट वी नीड टू एंश्योर दैट से माने जहा बिकु छंती ठीक प्रॉपर दाम रे हाइजीनिक जिंस बिकु छंती बिकॉज़ अल्टीमेटली खाउची किए सिटीजन एंड स्टेट कहां पे काम करूची सिटीजन तमे जहां भी तमे देखुछ ना तम चारियाडे खाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चली इंटरनेट तमे मु इंटरनेट जियो इंटरनेट यूज करूछु अच्छा ठीक अछि प्राइवेट सेक्टर बट ऊपर किए बसी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज स्टेट तो तमे मु इंटरनेट रे क्लास करि पारुछु रोल स्टेट तमे घरे पर बसिछ मु घरे बसी शांति रे बाहरे पूरा शांति अछि लॉ एंड ऑर्डर ठीक अछि केही डकैती होने बम ब्लास्ट होने किए स्टेट पाकिस्तान हम भीतर को पसी आसुने आर्मी अछि किए स्टेट बुझी पारुछ तो जदि स्टेट नथिले ना तमे पढ़ी पारंत ना मु पढ़ाई पारंती तमे घर बाहर रोड स्टेट ट्रैफिक पुलिस स्टेट ट्रैफिक लाइट स्टेट ट्रैफिक लाइट भी स्टेट और जदि एमती गोटे लिखा आइछि रास्ता रे कमिशनरेट पुलिस लुहा बोर्ड एटा भी स्टेट ही हैज आल्सो सर्टेन अथॉरिटी से अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी रे मु कहबी तुमको गोटे लोक भुवनेश्वर जे रहउछ जानिथिबो जो छक माने गो ट्रैफिक छकर जदि केही नाहंती एमती गाड़ी सेमती गाड़ी पसुची माने अव्यवस्था सेठी गोटे लोक खाली माटिया ड्रेस पिंधी की एमती हाथ देखै दउची सबु गाड़ी रहिला ऑडी हो मर्सिडीज हो बीएम खाली गोटे हाथ एमती स्टॉप सबु गाड़ी रहिला सेम कहले जाउची व्हाई सेटा हला अथॉरिटी ही स्टेट द ट्रैफिक कांस्टेबल किछि नै बेचारा स्टार फार किछि नै खाली माटिया ड्रेस गुटे पिंधिछि से हाथ देखे देले गाड़ी अटकिला काहे की अथॉरिटी ही हैज द तमे मु ठिया चलो काली हाथ दे के सुनियो तमे कि मु जदि ठिया हेबा हाथ मारिबा बढ़िया ब्लेजर फ्लेजर पिंधि की बढ़िया ड्रेस पिंधि की जदि हाथ मारिबा के सुनिबे नो वन बट सेही माटिया ड्रेस रे गुटे कांस्टेबल ठिया हेछि एमती हाथ देखे दउची गाड़ी अटकुची काहे की because he is state that is the significance of state रोड रे कमिशनरेट पुलिस रो बैरिकेड लागि छि तमे आकु जीवो नाही काहे की स्टेट अथॉरिटी नॉर्मल गुटे बैरिकेड लागि छि तमे इनते साइड करि के पळेबो बट जदि कमिशनरेट पुलिस लागि छि यू डोंट डेयर टू गो तो सेमिति स्टेट एज ए रेगुलेटर स्टेट एज ए फैसिलिटेटर एनपीए ही गला अच्छा तापर एनपीएम कोन सिंपल कहि दउची न्यू पब्लिक मैनेजमेंट देखो दीटा वर्ड हैला गोटे हैला पब्लिक मैनेजमेंट आगुर हमें जानि छ पब्लिक मैनेजमेंट व्हाट इज द न्यू ओके देखो न्यू राइट फिलोसॉफी पर कोन हैला पब्लिक अछि एठी प्राइवेट अछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन धीरे को अछि सो यूजुअली हमें कोन पाउ अच्छा usually what do you think who is more successful public administration or private administration who is you think is more successful than the other in general को किए बेसी सक्सेसफुल हेतिबो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन definitely more successful less successful
अच्छा एबे खाली यस नो रे आंसर दबो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिबो कि माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिबो कि नहीं कि मु भी सक्सेसफुल हुए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज हैप्पी विथ फेल्योर हैप्पी विथ लेस सक्सेस what do you think public administration is happy with less success or public administration want to success happy with failure or want success public administration want success so public administration less successful को ये change करेगी it want more successful अच्छा तमे कहो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बिचारा फेल्योर होउची प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेस ऊपर सक्सेस होउची गोटे भेरी सिंपल लेमेनिस्ट वे रे कह मु पॉवर्ड वर्ड यूज करो नै मु तुमको भाबुची गोटे तुम किछि जानि न आई वांट यू टू आंसर कि कोन तुमको लागुची कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखुची प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मु सक्सेसफुल नुह तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केमिति हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर सक्सेसफुल गोटे लेमेन आंसर दियो मते तुमको कोन लागुची पॉवर्ड भूली जा गोटे लेमेन आंसर दियो कि तुम सामने गोटे देखुच लोक सक्सेस तुम सक्सेस हे पारन तुम केमिति माने हे पारिबो सक्सेस किछि माइंड को आसुची केमिति हे पारिबो सक्सेस यस तुम कोन करिवो कि प्राइवेट जहा करूची व्हाट प्राइवेट डू यू अडॉप्ट वेरी सिंपल हाँ से स्मार्ट वे कोन जहा प्राइवेट सेक्टर करूची सो in order to success public administration adopt successful practice of private administration this is what this is new public management बुझिलो आउ किछि नो this is new public management there is a question I will show you a question the term new public management essentially a market based ideology characterized by the importation of idea generated in private sector within public sector ए क्वेश्चन रे एनपीएम रो डेफिनेशन दे देछि कि मार्केट बेस्ड आइडियोलॉजी को तमे एडॉप्ट करिवो कि एडॉप्ट करिवो पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल गॉट इट दिस इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आकु जीवा हमें बट आज खाली गोटे सुपर फ्लो जानि तो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कोन प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुल हैला पब्लिक सेक्टर तांको आइडिया को एडॉप्ट कला सक्सेसफुल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट yes तापर थ्योरिस्ट आइडिया केटल ओसबर्न गैबलर क्रिस्टोफर हुड ओएन ह्यूज we will discuss এটা গোটে দেখো पब्लिक चॉइस अप्रोच कोन कहूची सपोज गोटे पब्लिक अछि हैला दही बरा ये दही बरा बिकुची ठीक अछि दही बरा स्टोर समस्ते दही बरा बिकुचंती situation A or situation B where you think there is public choice
where you think situation A गोटे दुकान अछि इटी चारटा दुकान अछि समस्त दहीबरा बिकुचंती बहुत सिंपल वे कहूची मु तो कोटा A और B तमे कोटा भाबुचो कि पब्लिक चॉइस अप्रोच अछि पब्लिक हैज अ चॉइस yes definitely एथि किछि भाबिबार नाही this is public choice approach ହେଲା एठी गोटे दहीबरा और तार बेस्ट एग्जांपल मु दिए आरडी कॉलेज साइट रे चाट दुकान माने अछि देखि दिबो गोटे लाइन रे छोटा सातटा चाट दुकान अछि मां मंगला चाट सारला चाट दिस चाट दैट चाट एंड समस्त यूनिफॉर्म प्राइस समस्तଙ୍କର 40 टका समस्त गोटे गोटे दहीबरा देबे समस्त सेम जिंस देबे काहारी अधिका प्राइस नो and this is known as our public administration of public choice approach ହେଲା what is public choice approach institutional pluralism multi actor paradigm overlapping jurisdiction तीनटा वर्ड अछि देखो एठी अछि मल्टी एक्टर पैराडाइम एक्टर 1 एक्टर 2 एक्टर 3 एक्टर 4 so this we call multi actor paradigm एगला institutional pluralism चारटा इंस्टीट्यूशन अछि institutional pluralism this is upare kono this is institutional singularism single actor paradigm here multi-actor paradigm institutional pluralism with overlapping jurisdiction what is this overlapping jurisdiction समस्ते दहीबरा बिकुचंती समस्ते चाट बिकुचंती जदि ये दहीबरा ये चाट ये आउ किछि भी पकुड़ी ये बरा बिकुतांता तो we cannot say this is institutional pluralism चारटा दुकान चारिटा जाको दहीबरा बिकुचंती चाट बिकुचंती so there is a competition between them and who will benefit you as a customer you as a consumer will get benefit simple this is hela eta hela public choice approach तुम गोटे पूरा लेमनिस्ट वे रे बुझेली institutional pluralism multi actor paradigm overlapping jurisdiction this will result into benefit of consumer or customer this will result into debureaucratization decentralization citizen centric approach आउ डिटेल आमे पढिबा थ्योरिस्ट मानकर आइडिया विंसेंट ओस्ट्रोम हला ओस्ट्रोम गोटे खाली मोर नाम मने अछि तीन चारटा थ्योरिस्ट अछंती जॉन ओस्ट्रोम जॉन बुकानन वाइट ईस्ट हैला सो एथि खाली जानि थाओ दिस इज पब्लिक चॉइस अप्रोच नेक्स्ट स्टेट वर्सेस मार्केट स्टेट हला गवर्नमेंट मार्केट प्राइवेट सेक्टर स्टेट प्राइवेट सेक्टर ये कोन हला न्यू राइट फिलोसॉफी रे प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हला so government work as a regulator work as a facilitator state should play a legitimate role market should play an effective role state should come out with rules and regulation under which market will operate the market should absence of market overdeveloped state presence of market developed state so state and market both should work in a cooperative manner
to ensure benefit of citizen. सेटा है स्टेट वर्सेस मार्केट एठी हमें अमर्त्य सेन जैन दर्जी दीपक नायर एमानकर आइडिया पड़िबा व्हाट दे हैव सेड एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया नेशन हैला बुझिलो स्टेट और मार्केट स्टेट रो रोल अछि कोन लेजिटिमेट रोल स्टेट रेगुलेट करिवो फैसिलिटेट करिवो एंड मार्केट कोन करिवो मार्केट विल प्रोवाइड goods and service to the citizen in an effective way under the regulation made by the state. Because without state intervention, market become monopoly. Market become a blood-sucking organization. एतिकी जानो state versus market. और last रहिला good governance. देखो good governance very simple very कहि दउचे. Before good governance paradigm कोन थिला legislator, executive, judiciary. They govern. But good governance paradigm कोन कला legislator, executive, judiciary, along with them, these are non-state actor, that is private sector, market, NGO, civil society. Private sector, market, NGO, civil society. So inclusion of non-state actor in the process of governance is known as good governance. ହେଲା ଏତିକି ବୁଝ एंड एटा की कहिला 1991 रे वर्ल्ड बैंक कहिला if you want loan from me you need to listen to me एंती ଗୋଟେ डेवलपमेंट ହେଇଛି 1887 तापरे 1940s रु 1970s भितरे डेवलपमेंट ହେଇଛି NPA NPM it is for NPM ହେଇଛି NPA CPA DA 1991 रे good governance paradigm new public administration comparative public administration development administration and both are related comparative public administration development administration good governance paradigm we will discuss how they are related first comparative asila तापुरे development asila तापुरे good governance paradigm asila so good governance paradigm is a new avatar of development administration question भी आसी जी देखिए तो जी question good governance has emerged as a new paradigm of development administration भावो good governance paradigm new avatar of development administration detailed story कहिबी good governance काहे कि आसिला को context रे आसिला how it is related to comparative public administration how it is related to development administration what is the status of good governance paradigm today आज डेट रे कोन अछि good governance paradigm आज गोटे सुपरफ्लुअस जानि तो कि हां एटा good governance paradigm CPA DA पर आसिला and good governance paradigm रे कोन हैला बेसिक जिंसो कि it is it is कोन जेते non state actor through this non state actor citizen participation in governance increase it will result into more accountability more transparency more citizen centric approach informal approach bottom up communication everything so this is good governance paradigm just etiki jani tha hela so like that we will discuss the theorist mane in detail ne superfluous हिसाब रे कहि देबी कि माने theorist कोन काहे कि classical को जाय काहे कि human relation काहे कि behavioral okay so tomorrow we will discuss in that way so it will take maybe 2 3 4 class सुनो आराम रे फर्स्ट बसाओ कि सिलेबस टा कोन
it is I can say it is post mortem of syllabus. Syllabus टा कौन फास्ट जानो तापर भीतर को पसिबा हिला रेस्ट एश्योर कहारी किछ असुविधा होबने माने एटलिस्ट तमरो जीएस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे you will find POBET the most easy one तापर POBET थ्रू रु तमे GS2 टा तुमको बहुत इजी लागिबो एटा मोर तम प्रति माने एश्योरेंस काहे कि GS1 GS3 और 4 रो किछि सिलेबस रो ठीक ठिकाना नाही आगुरु गुटे जो कहा होतरा कि GS तुमको सिलेक्ट करिवो कंप्लीटली रॉन्ग टेक माय वर्ड ऑप्शनल ही तुमको सिलेक्ट करिवो बिकॉज़ ऑप्शनल देयर इज अ लिमिटेड सिलेबस क्वेश्चन सेही भितरु आसीबो and you can if you prepare well you can write well तो 500 मार्क रु 300 प्लस तमरो आसीबार बहुत स्कोप अछि बट जीएस रे 1000 रु 400 आनिबा भी डिफिकल्ट so I will make sure that you will get more than 300 plus mark and this POBET approach will help you in GS2 तमे ए वर्ष रैंडमली पचारो पिला को जहा को भी पचारो फर्स्ट पचारि दो ऑप्शनल कोन नॉन POBET पिला पचारिबो GS2 तमे निजे कहि देबो GS2 भलो हि नथिबो से कहबो हां ठीक कहउछ केमति जानिलो रैंडमली तमे पचारो पिला को जोटी लाइब्रेरी पाउछ जी भी मेंस देछि तमे चिन्हिन ऑप्शनल कोन ना सोशियोलॉजी GS2 केमति करिछ से कहबो ना भलो हि POBET ऑप्शनल GS2 हां भलो हिछ सो GS2 रे कंप्लीट हेल्प करिवो GS4 रे भी हेल्प करिवो तमको देखो मु टिके भाबिथिली हेई पारिबो बोली एते एक्युरेसी हो बोली मु जानि नथिली मु कहूतिली हेल्प मिलिबो बट एते हेल्प मिलिबो बोली मु भी जानि नथिली इट इज लॉक it is completely locked okay so tomorrow we will discuss ha everyone given नुआ पिला अछ ना तमे टिके गो थ्रू करो मु एबे तुमको WhatsApp रे देई दोउची प्रीवियस ईयर माने सिलेबस आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज यू जस्ट गो थ्रू इट तमे थरे दुई थर सेटा लिखि दियो सिलेबस दि चार थर लिखि दियो you have to remember the syllabus हैला समस्त पई सिलेबस टा मन रखिबा जरूरी पूरा मुखस्त तो 10-20 थर सिलेबस लिखि दियो खाली मन रहि जिवो okay so tomorrow we will discuss about principal theory of organization तापर unit 3 4 5 एमिति discussion करिबा okay so meet you tomorrow we will discuss what is there in principle and theory of organization